All right, now we're looking at a massive crackdown that's taken place in Ahmedabad, the municipal corporation there launching Operation Clean, basically demolishing illegal settlements near Chandola Lake, many of which were reportedly occupied by Bangladeshi nationals. Action followed intelligence inputs and a directive from the Gujarat Home Ministry, which had earlier ordered the removal of unauthorized structures. You see it on our screens there, that were allegedly built by illegal immigrants. According to the Joint Commissioner of Police Crime, Sharad Singhal, over 100 Bangladeshi nationals had been identified as illegally residing in the Chandola area. Listen in. ये जैसा कि आप जानते हैं आसपास चंडोला तालाब है और इस पे पहले भी कामगिरी 2009 में की गई थी। फिर से इन लोगों ने गैर कायदेसर मिलकत स्थापित की है। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और एक उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। पुलिस ताकि जान हानि ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको ध्यान में लेके पुलिस बंदोबस्त रखा गया। 7,000 से ज़्यादा लोगों को असामाजिक कैटेगरी में हमने आइडेंटिफाई किया है। अभी तक जितने असामाजिक गुंडा तत्व थे उनमें से करीब 373 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध हमने इलीगल डिमोलिशन की कामगिरी की है। करीब 1046 ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने अपने घर में, बिल्डिंग में इलीगल बिजली का कनेक्शन रखा था। वो बिजली Now, power supply was initially cut off at these settlements before moving on with the demolition drive that had 80 bulldozers, 60 dumpers, over 2,000 police personnel, including the State Reserve Police, were deployed to carry out this large-scale demolition drive. Drone surveillance was used to monitor this operation real time. The operation is considered as Gujarat's largest ever demolition drive, with their civic body AMC and their teams across 7 zones participating. Authorities have said the drive would continue over the coming days, with debris removal happening on a rolling basis. Demolition is being tightly coordinated between the AMC, police and Home Department of Gujarat.